So this is the part 2 of the playlist, the French Revolution. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. So you understand what is riots? Riots means उसको हिंदी में दंगा कहते हैं, उड़िया में भी, and where people fight against any government schemes or any rules. So they want to show that they are protesting. So they do all sorts of these things. They go over to the street, they stop all those vehicles, they stop all the transportation. Okay. And here is a picture in your book. You can see that is also an image of riot, how they stormed this whole fortress of Bastille. This is the demolition of Bastille, you can see. So most people were protesting against the high price of bread. So what happened at that time? The price of bread also increased. Like the staple diet of India is rice or roti, right? We mostly eat rice in our day-to-day life. They eat, instead of rice, they eat bread. So when this price of bread increased severely, they started protesting. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France. So it out a starting point thila. Like there were a chain of events, like from A, B happened, from B, C happened, from C, D happened, and ultimately E happened. So likewise, good event hela, for that lead to another event. Now that lead to another event. And end kon hela, there was execution of the King of France. You understand what is execution? Execution means naku mari diya hela. The most people at the time did not anticipate this outcome. केही भाभी नथिले जे एमती हबो, किंग को ही मारी दिया हबो, but it happened. How and why did this happen? एटा में पढ़िबा. Next topic है. So our next topic is French society during the late 18th century. कि ता पूर्वरु आमे टाइमलाइन को टाइमलाइन विषय डिस्कस करूचे 14 जुलाई 1789. से टाइमलाइन पूर्वरु French society केमतिया थिला. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. So एबे पुनी आमे बैक को पळेले टाइमलाइन रे आमे 1789 रे थिले. Now it is 1774. So जने नुआ king throne रे बसले, means जने नुआ राजा आसिले France रे. His name was Louis XVI, and I'll just show you his image. So this gentleman is Louis XVI. So he belonged to Bourbon family. जेमती इंडिया रे किंग्स मानक फैमिली डिस्कस करू, we say Gupta family or Chola's family. Now this gentleman belonged to Bourbon family of kings, ascended the throne of France. Ascended means he took over the throne of France. He was 20 years old at that time, say only 20 years old, and married to Austrian princess Marie Antoinette. So marriage करथिले से काहागु Austrian princess को. Upon his accession, the new king found an empty treasury. So कौन हला जिते से राजा हले, he found an empty treasury. Now the king and the royal family used to have a treasury for all those administration works they have to perform. Like got a king ro con duty है, they have to finance all those soldiers जो मैंने तांको सर्विस करंती, तांको जहाँ भी सर्वेंट्स अच्छी, केमिति राज्य चलिवो, कोठी let's suppose farming बहुत लॉस है जी, सेठी किंग को हेल्प करे पड़िबो. So सब एडमिनिस्ट्रेशन के देखे, किंग देखंती. So he needs money for that. सेथिपाई थाए राजकोष, which is known as treasury. But when Louis XVI became king, he found an empty treasury. मतलब से जेतले राजा हले, तांका राजकोष रे किछि पैसा नथिला. Long years of war had drained the financial resources of France. So बहुत वर्ष जेतले war हेतला, ता पूर्वरु फ्रांस रो बहुत वर्ष war हेतला. सेथिरे जहाँ भी फाइनेंशियल रिसोर्स थिला फ्रांस रो सबु पळेइतला. ड्रेन्ड आउट मींस सबु सेथिरे पळेइतला, किछि नथिला. So the question may arise कि war रे एमति कोन हला जे तांका फाइनेंशियल रिसोर्सेस पळेला, because जेतले war हुए बहुत फाइनेंसेस सेथिरे यूज. लेट्स सपोज गोटे जगह रे war होची, अगेन जो सोल्जर्स माने सेही war रे पार्टिसिपेट करिवे,
तांकू सैलरी दबा पड़ो अगेन इंजुरीज हील करिया पे मेडिसिन्स वगैरह फूड सप्लाई दबा पड़े सोल्जर्स मान को दे हैव टू ईट मोर प्रोटीनियस फूड सो दैट दे कैन रिकवर वेरी वेल टू अगेन कम बैक टू द वॉर सो ए सब जिनस कौन हुए बहुत पैसा यूज हुए और फाइनेंस यूज हुए तो से लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर जो कौन होता फ्रांस रो फाइनेंशियल रिसोर्सेस से ड्रेन्ड आउट हो जाता added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles so Versailles रे तांकर गोटे palace थिला let me show you the palace you can see this is this immense extravagant palace of Versailles so ethi tankara court means darbar bose joti raja basandi he discusses about important things of administration with all his tanka darbar re jo mane participate karandi all those priest ministers समस्त मिसी किसी गोटे important issue पर discussion करते and his court was extravagant means luxurious बहुत सुंदर थी and जो जिनसटा जति की you know luxurious था ताको maintain करिया पे भी सेति की cost दरकार पड़े so ए जो इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस थिला ता पाए भी बहुत पैसा दरकार पड़तो ताको मेंटेन रखिया पे under Louis XVI France helped the 13 colonies American colonies to gain their independence from the common enemy Britain so what happened कि अमेरिका रो एनिमी थिला ब्रिटेन ओके सेते बेले अमेरिका रो ओनली 13 कॉलोनीज थिला ओके अब फ्रांस रो भी कॉमन एनिमी थिला ब्रिटेन सो बोलते ना दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड है सिमिलरली फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन सो जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थिले से माने ब्रिटेन को इंडिपेंडेंस पाइले विद द हेल्प ऑफ फ्रांस सेटा केबे हेतला लुइस 16 को टाइम ही से इवेंट हेतला the war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion now livers जेमते हमें रुपीस यूज करू जेमते अमेरिकन्स डॉलर्स यूज करंती जेंदे यूरोस यूज करा जाए सिमिलरली सेवे का टाइम रे फ्रांस रे लिवर्स यूज करा होतला एज अ यूनिट ऑफ करेंसी राइट सो पूर्वरु डेट केते थिला 2 billion livers war जो को आउ केते डेट पळे आसिला 1 billion livers already तांको पाखरे पैसा नाही lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans lender के जे पैसा दिए let's suppose you do not have money right now and you want money for some emergency or something किसी ओडे जिंस पाए तुमको निहाती पैसा दरकार but you do not have money what will you do you will take money from somebody जहा to you know very faithful person तमे तांको किछि पैसा उधार नबो and you will either जदि से बहुत भलो फ्रेंड तमे डायरेक्टली तांको प्रिंसिपल अमाउंट जहा भी थियो वापस कर देबो और इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट तुमको से प्रिंसिपल सहित ओडे इंटरेस्ट चार्ज करा जाय इवन तुम जदि बैंक रो भी लोन नियंती जो माने सेतिरे किछि ओडे इंटरेस्ट है 5% इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट और 10% इंटरेस्ट किछि भी हेतले so similarly Louis 16 को टाइम में भी तांको पैसा दरकार थिला सिंस से बहुत डेट रे थिले से लेंडर्स को भी पैसा नहीं थिले माने से भी उधार आनथिले स्टेट तरफ सो से माने भी जो माने लेंडर्स थिले जो माने तांको पैसा देइथिले स्टेट को से माने 10% इंटरेस्ट रे लोन चार्ज करले कि हमको इंटरेस्ट परसेंटेज 10% दरकार जोटा कि बढ़ाई दिया थिला पूर्व कम थिला so the French government was obliged to spend an increasing percent of its budget on interest payments alone so जहां भी इनकम हुए गवर्नमेंट रो इनकम कोट हुए चाहे से मोनार्की हो चाहे से डेमोक्रेसी हो को भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो each government earns money through taxes टैक्स रे अर्न करंती से माने सिटीजंस को ऊपर किसी ओडे टैक्स लगांती जो भी जिंस डेली लाइफ में यूज हुए सब जिंस पर टैक्स लगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम गोटे अलग टैक्स लगे सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एमिति ही पैसा इनकम करंती तांका एडमिनिस्ट्रेशन पाए सो जहां भी पैसा गवर्नमेंट पाको आसुला टैक्स थ्रू रे तार गोटे बड़ अमाउंट केवल इंटरेस्ट पेमेंट रे ही पड़ुतला सो टू मीट इट्स regular expenses such as the cost of maintaining an army the court running government offices or universities the state was forced to increase taxes so ता पाखरे आउ किसी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बट रेगुलर एक्सपेंसेस अछि जोरा कहै डेली खर्च रेगुलर एक्सपेंसेस मींस it's not one time investment
वन टाइम इन्वेस्टमेंट होची जोटा तुम थरे किनी देलो एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम तुमको तार चिंता करिया दरकार नहीं. नाउ देयर आर सम थिंग्स जो रेगुलर एक्सपेंसेस यूज हुए मींस जोटार मेंटेनेंस कॉस्ट गोटे थाए कि ताको सबले मेंटेन करिया पड़े व्हिच आर आर्मी. अब एमित तो नुह तुम आर्मी को थरे सैलरी दे दबो से तुमको लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करबो सेमित तो नुह से माने गोटे टाइम पीरियड पे सैलरी नेबे पुणी आ गोटे टाइम पीरियड पे पुणी सैलरी नेबे देन कोर्ट को मेंटेन करिया पड़े द क्लीनलीनेस ओके आउ जहाँ भी लग्जरी आइटम थिला ताको सब जिंस को मेंटेन करिया पड़े अदरवाइज सब जिंस खराब हो जिवो. रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस को रन करिया पे गवर्नमेंट जहाँ भी एम्प्लॉइज थिबे ऑब्वियसली राजा गोटे एंटिटी पूरा स्टेट को कंट्रोल कर परिबे तांको अंडर रे कोठी ना कोठी लोक थिबे हु कंट्रोल अ वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ एरिया से माने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुआ जाय तांको जो माने प्रेजेंट गवर्नमेंट रो अंडर रे काम करंती. जेहेतु से माने गवर्नमेंट पाए काम करंती दे विल टेक मनी फॉर दैट दे विल चार्ज मनी व्हिच इज कॉल्ड सैलरी. सो तांको भी सैलरी दरकार अदरवाइज से माने काम ही करिवेनी. यूनिवर्सिटीज सेठी भी पैसा दरकार टीचर्स विल टेक मनी एंड all those universities रे जो employees थे सेमाने पैसा नेबे. The state was forced to increase taxes. So regular expenses बड़ी चलथिला खर्च बड़ी चलथिला. So कोन कले से he was forced to increase taxes. तांको पाखरे अलगा किछि मेथड नथला अलगा किछि वे नथला सिचुएशन रो बाहरिया पर. Yet even this measure would not have sufficed. But तांकर डेट एते अधिया बढ़ी जायथिला तांकर ऋण एते अधिया बढ़ी जायथिला जे एतिकी मेजर्स माने एतिकी करथिले भी तांको पय सफिशिएंट हे नथांदा कि ओनली टैक्स इंक्रीज कर देले भी तांकर डेट कम हे नथांदा. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes. And kahi ke emti because this whole French society was divided into 3 estates. In every part of the world society रे काहाकु ना काहाकु अपर सोसाइटी और अपर क्लास रो दर्जा दिया हुए गोटे पार्ट ऑफ द सोसाइटी को लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी रे दर्जा मिले. आवेटा सब सोसाइटी रे चले. इन इंडियन सोसाइटी वी हैव कास्ट सिस्टम वेयर वी हैव डिविजन ऑफ 4 डिफरेंट कास्ट टाइप्स ब्राह्मण्स क्षत्रियस वैश्य शूद्रस. एंड सिमिलरली फ्रेंच सोसाइटी रे भी सही स्टिग्मा सही स्टीरियोटाइप्स चालुथला बट इन different context. Their context is different, but the similar thing is sethi भी division thila. His system was three states. सेतेले 3 states system thila. एठी wait. तो बुक रे पिक्चर दिया है जो तीनटा स्टेट्स को मेंशन है. फर्स्ट स्टेट इज क्लर्जी, सेकंड स्टेट होची नोबिलिटी और थर्ड स्टेट रे बाकी जहां भी रहले समान आसले बिजनेसमैन मर्चेंट्स ऑफिशियल्स लॉयर्स पेजेंट्स आर्टिसंस स्मॉल पेजेंट्स सब आसले थर्ड स्टेट रे. नाउ सो yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. So ए जो तीनटा स्टेट थिला ओनली थर्ड स्टेट रो मेंबर्स माने टैक्स पे करूथले. क्लर्जी और नोबिलिटी ए दीटा स्टेट रो लोक टैक्स पे करूनथले तांकू टैक्स छडा आइतला. सो जदि गोटे कंट्री रो पॉपुलेशन मान लो 3 मिलियन ओके जदि टैक्स समस्त को नि आइथांदा 3 मिलियन पीपल टैक्स देथांदे. बट फ्रेंच सोसाइटी अनुसार तीनटा स्टेट रे पूरा पॉपुलेशन डिवाइड हो गले. लेट्स सपोज एवरेजली ईच स्टेट रे 1 मिलियन पीपल रहले. फर्स्ट स्टेट रे 1 मिलियन, सेकंड स्टेट रे 1 मिलियन, थर्ड स्टेट रे 1 मिलियन. देन ओनली जदि थर्ड स्टेट टैक्स पे करबो तो ओनली 1 मिलियन पीपल ही थिले जो माने टैक्स पे करथले. सेते बेले तो पॉपुलेशन और कम थिला. सो काफी कम लोक थिले जो माने एक्चुअली टैक्स पे करूथले. तो सेति पे तांको टैक्स रे ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रो चालुथला. The society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. So, केबे टू स्टार्ट हेतिला ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी ऑफ estates सेडा थिला ओडे फ्यूडल सिस्टम. मिडिल एजेस रे फ्यूडल सिस्टम को डेवलप करा हेतिला जोथि सोसाइटी ऑफ estates को मेंशन करा हेछि कि तीनटा स्टेट्स रे हम सोसाइटी डिवाइडेड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और सेठू से जिंसडा कंटीन्यूअसली चलथिला टिल दिस पीरियड ऑफ टाइम we are talking about. Now old regime kaha ko use kara hue usually used to describe society and institutions of France before 1789. 1789 was a major
year for the history of France. So ता पूर्वरु जो सोसाइटी थिला फ्रांस रो ता पय गोटे टर्म ही अलगा यूज करा जाय ताको आज ओल्ड रेजिम जेमती हमरो इंडिपेंडेंस हेतला 1947 रे इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड प्री इंडिपेंडेंस इंडिया which means I mean 1947 पूर्वरु जो इंडिया थिला ता विषय डिस्कस करछु if you are indicating towards India after 1947 आमे कोन वर्ड यूज करियो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया so we understand कि एठी 1947 परे जो इंडिया ता विषय डिस्कशन होछि similarly 1789 पूर्वरु फ्रांस को डिस्क्राइब करिया पय यूज करा होतला ओल्ड रेजिम now figure 2 shows how the system of estates in French society was organized केमिति ऑर्गेनाइज हेतला सेटा हम पिक्चर देख परियो this is the picture right yes peasants made up about 90% of the population however only a small number of them owned the land they cultivated about 60% of the land was owned by nobles the church and other richer members of the third estate so what happened peasants means farmers thile 90% of the population so jeti total population thile setru 90% farmer hi thile which means what a बहुत बड़ा part of the population was farmer however only a small number of them owned the land they cultivated but कौन होतले जे बहुत कम नंबर ऑफ फार्मर एमती थिले जो माने जो लैंड से जो थरे चाष करथिले सेटा से निजे कल्टीवेट करथिले मींस बहुत फार्मर एमतिया थिले जो माने बड़ बड़ जो मानकर जमी थिला तांको जमी रे ही काम करथिले तमे सुनी थुवे सिस्टम किछि फार्मर्स एमतिया थाते लैंड जो मानकर लैंड ही निजर लैंड थाए से माने सेठी तांको निजो ओन लैंड रे कल्टीवेट करंती आउ किछि फार्मर थाए जो मानको फार्मिंग जणा थाए बट तांकर लैंड न थाए तो से माने कोन करंती बिग फार्मर्स जो मानकर निजर लैंड अछि तांकर लैंड रे जे काम करंती आउ जहा प्रोड्यूस बाहर सेथरो किछि परसेंटेज से माने नियंती आउ गोटे बड़ परसेंटेज जहार लैंड एक्चुअली थाए ताकू मिले so however किछि कम लोक कम फार्मर्स थिले जो मानकर निजर लैंड थिला about 60% of land किए ओन करथिले nobles means the second estate रो लोक church means first estate रो लोक and other richer members of the third estate माने थर्ड स्टेट भीतर जो माने रिचर मेंबर्स थिले जो माने बिजनेसमैन थिले लेट्स सपोज मर्चेंट्स थिले से माने कोन वेल्थ तांकर अधिया थिले से माने ओन करथिले और फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही ओन करथिले the members of the first two estates that is the clergy and the nobility enjoyed certain privileges by birth तो by birth ही तांको किछि privileges मिलुथला in the similar manner जेमति इंडिया रे by birth casteism रो सिस्टम अछि you don't तमे वर्क अपन करनी कास्ट ऊपर कि मु बहुत हार्ड वर्क करी कि ऊपर कास्ट पड़ेगी by birth सेटा इंपोज करा जाय गोटे चाइल्ड ऊपर by birth brahmins are given certain privileges in the similar manner if you are born in a family which belong to first estate clergy or nobility tame by birth kichi certain privileges enjoy kara in French society at that time the most important of this was exemption from paying taxes to the state तो सेमान को टैक्स दबा को पड़ेनी जोडा हम पूर्व देखले कि ओनली थर्ड स्टेट ही टैक्स दबो सेकंड फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स पे करंती नाही the nobles further enjoyed feudal privileges nobles को आ गोटे ता ऊपर प्रिविलेज मिले कि सेमाने फार्मर को टैक्स नहीं परिबे सो सेमाने फ्यूडल ड्यूज करके गोटे ड्यूज एक्सट्रैक्ट करंती फार्मर्स को peasants को peasants were obliged to render services to the lord to work in his house and fields to serve in the army or to participate in building roads तो जेहेतु लैंड प्राय तो फार्मर्स हम जेंति डिस्कस करले तांकर निजर लैंड न थाए से माने बिग फार्मर्स को लैंड रे चाष करंती सो तांको ता बदल रे जेहेतु से माने तांको फार्म रे काम करचंती ता बदल रे ए स्मॉल फार्मर्स को कोन करिया पड़े ए बिग फार्मर्स को पाए सर्विस दवा पड़े जहार लैंड थाए तांको या तो घरे काम करिया पड़े तांको पाए आर्मी भलिया काम करिया पड़े रोड बिल्डिंग रे भी पार्टिसिपेट करंती बेसिकली तांको सर्विसेज दियंती लॉर्ड को the church to extracted its share of taxes called tithes from the peasants को तो church भी आवडे टैक्स में माने फर्स्ट स्टेट गोटे टैक्स नोची थर्ड स्टेट थ्रू सेकंड स्टेट गोटे टैक्स नोची थर्ड स्टेट थ्रू पुनी थर्ड स्टेट आवडे टैक्स दोची गवर्नमेंट को जोडा के हम देखिबा आगु सो चर्च भी गोटे ता शेयर ऑफ टैक्स ने जोडा कि टिट्स सेटा भी peasants को ही नहीं जाए ओके
एंड फाइनली सबू थर्ड मेंबर जितने मेंबर समस्त को टैक्स पे करिया पड़े स्टेट को जोटा कि हमें देखिले दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स पूरे डायरेक्ट टैक्स तो देवा पड़े टेली एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स जोटा कि एवरीडे कंजम्पशन जोटा कि तुमको निहाती डेली दरकार सॉल्ट निहाती दरकार टोबैको निहाती दरकार सेबेका टाइम रे लोक बहुत टोबैको यूज करथले सो सेबेका डे टू डे यूजेबल आइटम्स ऊपर भी आउट टैक्स लगे इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स बिथला इनडायरेक्ट टैक्स बिथला सो यू कैन सी फार्मर्स को ऊपर केते बर्डन दिया है जे माने केते सारा टैक्स दोउछंदी to other members of the society state ho first state ho second state ho samastungu tax pay koruchandi the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone माने स्टेट रो जति की बर्डन अछि फाइनेंशियल एक्टिविटी रो तार जति की डेट अछि तार जति की रेगुलर यूज रेगुलर एक्सपेंसेस अछि सबुत पय से टैक्स काहाडू एक्सट्रैक्ट करूची थर्ड स्टेट कोट ही एक्सट्रैक्ट करूची तो से एपटे टैक्स भी आहुरी बढ़ाई देला सो यू सी फार्मर्स माने केते रेट रे फ्रांस रे एक्सप्लॉइट होथले बहुत एक्सप्लॉइटेड होथले से टाइम रे यू गेट द आइडिया